ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को बड़ा झटका। 3 जदीद F-15E लड़ाका तैयारे तबाह। ईरान का अमेरिकी तैयारों को निशाना बनाने का दावा। अमेरिका ने कुवैत में तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। पासदारानी इनकलाब के मुताबिक तैयारों को ईरानी दिफाई निज़ाम ने निशाना बनाया, जबकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक तीनों तैयारे ईरानी मिसाइल हमलों के दौरान कुवैत के दिफाई निज़ाम के फ्रेंडली फायर का निशाना बने। तमाम 6 पायलट महफूज रहे, जिन्हें कुवैती हुक्काम ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब ईरान के हमलों में जख्मी एक और अमरीकी फौजी हलाक हो गया। मारे गए अमरीकी फौजियों की तादाद 4 हो गई। अमरीकी और इसराइली जारी है ईरान का पलटकर वार। अमरीका के 3 तैयारे मार गिराए। पासदारान इनकलाब ने बड़ा दावा कर दिया। बताया अमरीकी तैयारों को ईरानी दिफाई निजाम ने निशाना बनाया। अमरीकी तैयारों ने ईरानी हुदूद की खिलाफ वर्जी की, जिस पर इन्हें निशाना बनाया गया। हिट होने के बाद F-15 तैयारे कुवैती हुदूद में गिरकर तबाह हो गए। अमरीका का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। तैयारे फ्रेंडली फायर का निशाना बनने का दावा कर दिया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान मुसलसल मिसाइल और ड्रोन्स बरसा रहा था। कुवैत का दिफाई निजाम भी फाल था। इसी दौरान तैयारे फ्रेंडली फायर का निशाना बन गए। तीनों तैयारों के तमाम 6 पायलट्स बाहिफाजत इजेक्ट करने में कामयाब रहे। सोशल मीडिया पर 2 अमरीकी तैयारों की वीडियोस और 3 पायलट्स की तस्वीर सामने आ गईं। एक जख्मी पायलट को गाड़ी में ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ देखा जा सकता है। मकामी अफराद ने पायलट को कुवैती हुक्काम के हवाले कर दिया। अमेरिका और इसराइल के हमलों में शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामेनी की अहलिया भी शहीद हो गई। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ईरानी मीडिया के हवाले से खबर दी है कि खामेनी की अहलिया मंसूरा खजिस्ता भी गुज़िश्ता रोज हमले में शदीद जख्मी हुई थी, जो जख्मों की ताब ना लाते हुए आज जामे शहादत नोश कर गई। ईरान पर बड़ा हमला बहुत जल्द आने वाला है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी। एक बयान में अमेरिकी सदर ने कहा, ईरान में बड़ी कार्रवाई अभी बाकी है। अभी तक ईरान को पूरी शिद्दत से निशाना नहीं बनाया। जल्द हमलों की बड़ी लहर ईरान की तरफ आने वाली है। हम ईरान की आवाम की मदद करना चाहते हैं। हमारा मिशन ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और नेवी को तबाह करना है। ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकेंगे। अमेरिकी वजीर दिफा पीट हेग्सेट और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन किन की प्रेस ब्रीफिंग। पीट हेग्सेट ने कहा कि ईरान की सरजमीन पर अमेरिकी अफवाज मौजूद नहीं, लेकिन जंग में फतह के लिए किसी भी ऑप्शन को रद्द नहीं किया जा सकता। ईरान के खिलाफ जंग में जानी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमेरिकी वजीर दिफा के मुताबिक ईरान ने टैक्टिकल ऑपरेशन सेंटर को निशाना बनाया, जिसमें जानी नुकसान उठाना पड़ा। जनरल डैन किन ने कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई एक रात का ऑपरेशन नहीं है, मुकम्मल जंग है जो जारी है। ऑपरेशन का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। ईरान ने आज भी इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइलों की बौछार कर दी। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक तल अबीब में नेतन्याहू के दफ्तर और इसराइली एयरफोर्स के कमांड सेंटर को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर आज़म दफ्तर में मौजूद थे या नहीं, इसकी तस्दीक ना हो सकी। इसराइल के शहर बेरसबा पर मिसाइल गिरने से 15 अफराद जख्मी हुए। आपको ये बताएं कि मलबा हटाने का काम जारी है। इसराइली हुक्काम के मुताबिक हमले से मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो सकता है। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक 3 दिन में ईरानी हमलों में 777 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 86 अब भी जेर इलाज हैं। गुज़िश्ता रोज इसराइल के जेर कब्जा इलाके मिसाइल गिरने से उनके अंदर 9 अफराद हलाक हुए थे। ईरानी फौज के तर्जुमान का कहना है कि इसराइल के जेर कब्जा इलाकों से शहरी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। सेहूनी रियासत में सायरन खामोश नहीं होने देंगे। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले तीसरे रोज भी जारी। सूबा यज़्द, फारिस और कुर्दिस्तान में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया। हिलाल अहमर के मुताबिक उन हमलों में अब तक 500 से 55 अफराद जो हैं वो जाबहक हो चुके हैं। ईरानी जौहरी तंसीबात पर भी हमलों की इत्तलात हैं। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले जारी। दारुल हुकूमत तेहरान में कई जोरदार धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक डिप्लोमेटिक पुलिस सेंटर को निशाना बनाया गया। ईरानी सूबे यज़्द, फारस और सनंदज शहर पर भी हमले। हिलाल अहमर के मुताबिक अब तक 131 ईरानी शहरों पर हमले किए गए, जिनमें 555 अफराद जान से गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक मरने वालों में ईरानी फौज के 5, पासदाराने इनकलाब के 3 अहलकार शामिल हैं। तेहरान पर हमलों में एक चीनी शहरी भी हलाक हो गया। चीनी वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। ईरानी सफीर बराए IAEA के मुताबिक गुज़िश्ता रोज नतंज में जौहरी तंसीबात पर भी हमले किए गए, जबकि आलमी जौहरी इदारे का कहना है कि उन्हें अभी तक किसी जौहरी तंसीब के नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मशरिक़ वुस्ता और खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर ईरान के हमले। कतर एयरपोर्ट समेत अवामी मकामात को निशाना बनाया। बहरीन, कुवैत, ओमान, कब्रिस में भी ताबड़तोड़ हमले किए।
خلیجی ممالک میں امریکی اڈے ہدف، مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات بھی ٹارگیٹ، ایران کے مسلسل جوابی حملے جاری۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے CNN کو بتایا کہ قطری لڑاکا طیاروں نے ڈرونز اور میزائل مار گرائے، ایران کو ہمارے لوگوں پر حملوں کی قیمت چکانی ہوگی۔ بحرین کی بندرگاہ پر کھڑے امریکی آئل ٹینکر پر ایران کا میزائل حملہ، ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی۔ کویت میں امریکی سفارت خانے پر بھی ڈرون اٹیک۔ اومان میں آئل ٹینکر پر ڈرون حملے میں ایک بھارتی شہری ہلاک۔ قبرص میں برطانوی ملٹری بیس کے رن وے پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ عراقی کردستان کا شہر اربیل بھی دھماکوں سے گونج اٹھا۔ روسی صدر پیوٹن نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو فون کیا۔ روسی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی کی سنگین صورتحال پر گفتگو کی۔ روسی صدر نے مسئلے کو سفارتی طریقے سے حل کرنے پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کو بڑھانے سے روکنے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے پر اتفاق کیا۔ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ایک بار پھر حزب اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ صہیونی فوج نے حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کو اپنا ہدف مقرر کر دیا۔ جنوبی لبنان اور بیروت پر خوفناک بمباری، حزب اللہ کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کے سربراہ کو شہید کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ اسرائیلی حملوں میں 31 لبنانی شہری شہید، 149 زخمی ہو گئے۔ جنوبی لبنان میں درجنوں قصبوں کو انخلا کی وارننگ دی۔ جنگ زدہ علاقوں سے ہزاروں افراد محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی شروع کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی پے در پہ حملوں کے بعد حزب اللہ نے بھی راکٹ داغ دیے۔ گولان کی پہاڑیوں میں اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ لبنانی حکومت نے حزب اللہ کی عسکری سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عمان کے سلطان حیثم بن طارق سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے تناظر میں بگڑتی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے، امن کی بحالی اور دیرپا علاقائی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے سفارتی اقدامات کی حمایت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ ایران مزید کشیدگی روکنے اور سفارتی اقدامات دوبارہ شروع کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم سے شام کے صدر احمد الشرا نے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس میں مشرق وسطی کی صورتحال اور افغانستان کی حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خطے کی صورتحال کو انتہائی نازک قرار دے دیا۔ کہا کہ حالات کی بہتری مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ فریقین سفارتکاری کو ترجیح دیں۔ سفیروں کو بریفنگ میں بتایا افغانستان دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بنا ہوا ہے۔ آپریشن غضب للحق میں دہشت گردوں کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ Countries must abide by the principles of UN Charter and international law, including respect for the sovereignty and territorial integrity of other states, as well as international humanitarian law. Dialogue and diplomacy is the only way forward, not only for this region, but wherever there is any conflict. There are forums available. TTP, whose entire leadership is based in Afghanistan, continues to operate with impunity. Pakistan initiated this Operation Ghazbul Haq in self-defense. The protection of Pakistan's sovereignty and the safety and security of our people is the foremost priority of the government of Pakistan and the state. صدر مملکت آصف علی زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے ریکارڈ 9ویں بار خطاب۔ مارکہ حق کو سال 2025 کی پہچان قرار دیا۔ افغان طالبان رجیم کو ریڈ لائن پار کرنے کا انجام یاد دلا دیا۔ ایران پر حملے کی شدید مذمت، آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت پر دلی افسوس کا اظہار کیا۔ صدر کے خطاب کے دوران اپوزیشن شور شرابہ کرتی رہی۔ Didn't have the courage to say so. An Iranian regime armed with long-range missiles and nuclear weapons would be an intolerable threat to the Middle East, but also to the American people. Our country itself would be under threat, and it was very nearly under threat. I was very proud to have knocked out the Iran nuclear deal by President Barack Hussein Obama. That was a horrible, horrible, dangerous document. They would have had nuclear weapons 3 years ago, and they would have used them. But I'll not let that happen. For almost 47 years, this regime has been attacking the United States and killing Americans. Every time you see someone with missing arms and legs or a face that's been absolutely shattered violently, it was almost certainly caused by an Iran roadside bomb. They were put there by General Soleimani, who was the father of the roadside bomb. Very proudly, he thought, but I terminated him in my first term.
this was our last best chance to strike what we're doing right now and eliminate the intolerable threats posed by this sick and sinister regime. And they are indeed sick and sinister. Our objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capabilities, and you see that happening on an hourly basis, and their capacity to produce brand new ones, and pretty good ones they make. Second, we're annihilating their navy. We've knocked out already 10 ships. They're at the bottom of the sea. Third, we're ensuring that the world's #1 sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon, never going to have a nuclear weapon. I said that from the beginning. They're never going to have a nuclear weapon. They were on the road to getting one legitimately through a deal that was signed foolishly by our country. And finally, we're ensuring that the Iranian regime cannot continue to arm, fund, and direct terrorist armies outside of their borders. And we thought we had a deal, but then they backed out, and they came back, and we thought we had a deal, and they backed out. I said, you can't deal with these people. You got to do it the right way. Today, we grieve for the 4 heroic American service members who have been killed in action and send our love and support to their families. In their memory, we continue this mission with ferocious, unyielding resolve to crush the threat this terrorist regime poses to the American people, and a threat indeed it is. We have the strongest and most powerful by far military in the world, and we will easily prevail. We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always. And we have, right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. Whatever somebody said today, they said, oh, well, the president wants to do it really quickly. After that, he'll get bored. I don't get bored. There's nothing boring about this. Do you agree with that, Pete? I don't think there's anything, Mr. General. I think there's nothing boring about it. Somebody actually said from the media, I think he'll get bored after about a week or two. No, we don't get bored. I never get bored. If I got bored, I wouldn't be standing here right now, I guarantee you that, to go through what I had to go through. We also projected 4 weeks to terminate the military leadership, and as you know, that was done in about an hour, so we're ahead of schedule there by a lot. But please join me in thanking every American service member who bravely is standing in harm's way. They really are incredible, and I just want to thank you. We have a lot of them right here. Thank you very much. Thank you. Thank you, everybody. We have a lot of great service members here with us, too, in this beautiful building. Isn't it beautiful? We're adding on to the building a little bit. We're improving the building. See that nice drape? When that comes down right now, you see a very, very deep hole. But in about 1.5 years from now, you're going to see a very, very beautiful building. And there's your entrance to it right there. In fact, it looks so nice, I think I'll save money on the doors, because it can't get more beautiful than that. I picked those drapes in my first term. I always like gold, but I think we can save a lot of money. I just saved curtains. But, and it'll be spectacular. It'll be the most beautiful ballroom. I believe it because I built many a ballroom. I believe it's going to be the most beautiful ballroom anywhere in the world. And when you hear all that hammering out there, you know why the First Lady is not thrilled exactly. She said, will the pile drivers ever stop? You know, they go from 6 in the morning till 11:30 in the evening. Can you imagine? Here? You know what? To me, that's a beautiful sound. She doesn't like it. I love it. You know what? To me, other than here, because we're donating it, not a penny to the taxpayer. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तकरीब से खिताब कर रहे हैं।